everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो ICT फंडामेंटल की क्लास करने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर आपका 2 है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लिया है ICT फंडामेंटल्स का, जो कि एक बच्चे ने मुझे कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि इनके शायद असाइनमेंट के लिए यूज़फुल थे, तो वो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ इस सेशन में, इस क्लासेस में। सो पहला क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चंस, थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस वी हैड डन। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिफाइनिंग टर्म्स में है, सो दैट इज़ मेल मर्ज इन लाइब्रे ऑफिस, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसके साथ साथ कुछ HTML के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सो दैट विल डिस्कस हियर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। Now starting with a mail merge in the libre office. Mail merge in the libre office क्या होता है? Mail merge in is libre office tool that allow us to produce multiple document from a single document using a data source. Mail merge एक libre office tool है जो कि अलाउ करता है आपको प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट को, जो कि सिंगल डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं डेटा सोर्स में। टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज मेल मर्ज, लेट्स एग्जामिन द सिनेरियो हियर। दिस इज द डेटा सोर्स है जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट बना, उसका डेटा सोर्स का सोर्स डॉक्यूमेंट बना, और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के पास गया इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। दिस इज व्हाट द मेल मर्ज इज हियर। डेटा सोर्स का फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स बने, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के पास चले गए। दैट व्हाट मेल मर्ज इन लाइब्रे ऑफिस। A business owner, in an example you can say that मेल मर्ज क्या होता है, एग्जाम्पल के तरीके पे आप देख सकते हैं। A business owner wants to send a newsletter to all the customers to promote a new product. एक बिजनेस ओनर है जो कि एक न्यूज़लेटर जो है वो सारे कस्टमर्स के पास पहुंचा रहा है प्रमोट करने के लिए अपने न्यू प्रोडक्ट को। द लेटर इज अ डॉक्यूमेंट, जो लेटर है वो एक डॉक्यूमेंट है containing the company information and some standard text। तो जो एक लेटर है जो कि डॉक्यूमेंट एक है, उसमें आपके कंपनी की इंफॉर्मेशन दी गई हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट दिए हुए हैं। Instead of sending same letter to all the customer, the business owner wants to personalize the document by addressing each customer by his or her title, first and the last name। बेसिकली क्या, जो बिजनेस ओनर था, ये नहीं कि एक ही सेम लेटर वो सब उसने सबको भेजने के बजाय उसने क्या किया, जैसे कि उसको हर एक को अलग अलग उसके नाम, पहले नाम या लास्ट नेम से उसको उसके नाम टाइटल से, हिज हो या हर हो जो भी हो, ठीक है, हिज है, हर है, जो जिस भी डिजिग्नेशन, जिस भी जेंडर, जिस भी नेम से उनका सर नेम है, तो उसके थ्रू उन्होंने वो लेटर भेजा। तो दैट मेक्स एन इम्पैक्ट, और दैट व्हाट मेल मर्ज इन लाइब्रे ऑफिस इज यूज्ड फॉर। The second example for this in the mail merge in the library office we have here. For a small number of customers, the owner can simply copy and paste the text and change only the title and name of each customers. However, this process becomes tedious and consuming for larger number of customers entries. Basically, अगर आप छोटे number of customers, आपके पास कम numbers of customers है, अब उनको वो messages भेज रहे हो, तो आप simple copy और paste कर सकते हो कि आप सिर्फ आपने क्या किया, उसमें आपने सिर्फ एडिट क्या किया, उसका टेक्स्ट, उसका टाइटल, जो उसका नाम है, हर एक कस्टमर का डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है, वो आपने उसको सिर्फ चेंज किया। उसके बाद पूरा प्रोसेस जो है आपका बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स भी नहीं है आपके। Now what mail merge solve when we get a problem in the mail merging? Mail merge solve this problem by allowing us to make multiple copies of a document and automatically inserting data from a source to certain parts of the document. Mail merge was first used to produce mailing letters but has multiple application as well. तो मेल मर्ज जो है वो आपकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इवन दो वो अलाउ करता है अब डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज़, एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हेल्प करता है। और उसमें जो डेटा अगर आपका इंसर्ट हुआ है सोर्स के पास, तो वो उसको डॉक्यूमेंट से लेके उसको अपना फेच करके इंसर्ट करता है। और मेल मर्ज जो है वो पहले, जो सबसे पहले यूज़ किया गया था, वो सिर्फ आपका लेटर मेल करने के लिए यूज़ किया गया था, बट उसकी जो मल्टीपल एप्लीकेशन भी हैं। फॉर एग्जांपल, वो मल्टीपल एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं।
You can you issue multiple certificates for a school using a certificate template and the data containing the student name. If the data source contain email address, you can also use email merge and send a document to a multiple address by email. तो बेसिकली आप कैसे email merge को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट्स स्कूल के लिए निकलवाने हैं, आप वो सर्टिफिकेट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपका डेटा कंटेंट है, स्टूडेंट का नाम है, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो. इफ़ द डेटा सोर्स कंटेंट ईमेल एड्रेस, अगर डेटा सोर्स में ईमेल एड्रेस कंटेंट करता है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द मेल मर्ज टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू अ मल्टीपल एड्रेस बाय ईमेल. Now moving on with the next, that how to prepare a mail merge. Preparation is must. मेल मर्ज तो आपने देख लिया, आपने इसको यूजफुल देख लिया, आपने किस तरह से वो यूज होता है, क्योंकि नेसेसिटी पे यूज होता है, वो सारी चीज़ें देख ली. बट हाउ टू प्रिपेयर दैट? सो प्रिपरेशन फॉर दैट, preparation before using the mail merge tool, you must prepare for some of the things. So before mail merge, you have the tool you are using. So first is have your data source ready. आपका data source जो है वो ready होना चाहिए. क्रिएट द सोर्स डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट सोर्स को क्रिएट करना पड़ेगा. डिफाइन द डायनेमिक पार्ट ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट दैट विल बी मर्ज फ्रॉम द डेटा सोर्स. बेसिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन डायनेमिक पार्ट जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का है, जो कि मर्ज करेगा आपका डेटा सोर्स के साथ. अब बात करते हैं डेटा सोर्स की. तो डेटा सोर्स क्या होते हैं? डेटा सोर्स आप जैसा कि हम देख सकते हैं, in its simples from the data source can be any spreadsheet containing data in table format. The first row of the spreadsheet must contain the field or the column name. For our examples, the spreadsheet. बेसिकली अगर हम बात करते हैं डेटा सोर्स के बारे में, तो ये सिंपल जो आपका होता है एक डेटा सोर्स है, जहाँ पे आप कोई भी स्प्रेडशीट अगर आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे स्प्रेडशीट में डेटा दिया हुआ है टेबल के फॉर्मेट में, बट दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ टाइप टेबल, एंड जो पहली रो उसकी होगी स्प्रेडशीट की, वो आपका फील्ड या फिर कॉलम नेम कंटेन करना चाहिए. दैट could be in the form of the data source. A data source can be also a table from a libre office database. आपका जो data source है वो आपका टेबल के फॉर्म में हो सकता है, और वो कहीं से libre office database से भी आप ले सकते हैं. Now they're talking about the next one, that the source document. What were the source document that is needed? And the source document can be any writer document. source document आपका जो है वो भी कोई भी आपका writer document हो सकता है. A good practice is to mark the dynamic part of the document using a generic title and custom text field. In our example, the dynamic parts were the title, first and the last name of the customer. तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका कोई भी राइटर डॉक्यूमेंट हो सकता है. और एक अगर गुड प्रैक्टिस की बात करते हैं मार्क करने के लिए, एक डायनेमिक पार्ट जो आपका डॉक्यूमेंट का है वो एक जेनरिक टाइटल हो सकता है, कस्टमर टेक्स्ट फील्ड हो सकता है. जैसे कि आप अगर डायनेमिक पार्ट्स की बात करते हैं तो टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है कस्टमर का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सोर्स डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं आप. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव हियर इज यूजिंग मेल मर्ज. यूजिंग मेल मर्ज मतलब मेल मर्ज कैसे यूज़ किया जाता है? द मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप. तो यूजिंग मेल मर्ज में आपके मेल मर्ज में 3 प्रोसेस जो होते हैं, मेन स्टेप्स होते हैं. पहला है कनेक्टिंग द डेटा सोर्स विद द सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट से आप डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हो. इंसर्टिंग द टेबल फील्ड टू द डॉक्यूमेंट. आप टेबल फील्ड को डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करते हो. प्रोड्यूस द आउटपुट और मर्ज द डॉक्यूमेंट. आप जैसे ही आपको आउटपुट प्रोड्यूस होता है, आप मर्ज करते हो डॉक्यूमेंट में. तो ये 3 स्टेप है जब आप मेल मर्ज को यूज़ करते हो. आई रिपीट, द फर्स्ट वन इज कनेक्टिंग द डेटा सोर्स विद द सोर्स डॉक्यूमेंट, inserting the table field of the document to the document, produce the output or a merge document. Now the next is connecting the data source. कनेक्ट करते हैं जब आप डेटा सोर्स को. So connecting the data source में क्या है? Open the source document and choose edit एक्सचेंज डेटाबेस मेन्यू आइटम. आप सोर्स डॉक्यूमेंट को चूज़ करते हो, फिर आप उसको एडिट करते हो, फिर आप एक्सचेंज करते हो डेटाबेस को मेन्यू आइटम में. देन यू आर यूजिंग द कनेक्टिंग द डेटाबेस हियर. दिस कमांड ओपन द एक्सचेंज डेटाबेस विंडो. ये आपका कमांड जो है एक्सचेंज डेटाबेस विंडो को ओपन कर देता है. अब बात करते हैं HTML की कि HTML क्या होता है. तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट विद दैट ओनली. Hypertext markup language HTML is the standard markup language for document designed to display in a web browser.
It can be assisted by the technologies such as cascading style sheet, that is CSS, and scripting language such as JavaScript. HTML का फुल फॉर्म आपका होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो ये एक आपका स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट जो कि डिज़ाइन करता है हमारे वेब ब्राउज़र को, डिस्प्ले करता है जो, और ये आपका असेस करता है उन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसा कि हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट करते हैं, जो कि हम अपने वेब ब्राउज़र को इम्प्रूव करते हैं, ब्यूटिफाई करते हैं CSS के थ्रू ही, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू ही, और हम इसके साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट है. HTML elements are delineated by tags written using angle bracket. तो जो HTML element है वो आपका delineated जो आपका है वो tags के थ्रू होता है और आपका angle bracket के थ्रू लिखा जाता है. डेवलपर्स जो HTML के थे, तो डेवलपर्स HTML के वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और WHATWG वॉच जो है आपका, वो आपके डेवलपर्स थे. इन्वेंटर की बात करते हैं तो आपके जो HTML है उनको इन्वेंट टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था. Now moving on with next, that we can get to know about the HTML more, who had invented, as we had discussed, who the developer as well as the inventor. Now we will discuss about the language design, then the file name extensions, internet media type code developed by initial release, latest release, a type of format, container for, contained by, that all will be discussed here only. So in the case language design, that you have to understand, language design is WATWG WATG. The HTML stands for the Hypertext Markup Language. HTML is a standard markup language for a document designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by the technologies such as cascading style sheet and scripting language such as JavaScript. अब फाइल नेम एक्सटेंशन की बात करते हैं कि फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होता है, तो .html होता है और .html भी इसका एक्सटेंशन है, और एज वेल एज .htm भी अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो राइट एक्सटेंशन फॉर द HTML फाइल नेम. ओके, जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम HTML फाइल यूज़ करते हैं तो हम उसका एक्सटेंशन के साथ उसे सेव करते हैं, तो आप .html भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज .htm भी यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेट मीडिया टाइप जो आपका है वो आपका है text/HTML. टाइप कोड जो यूज़ किया जाता है HTML में, दैट इज TEXT, text, that should be in the capital letter. Developed by HTML is WATWG WATG. इनिशियल रिलीज जो हुआ था HTML का, दैट इज इन 1993, 27 years ago. लेटेस्ट रिलीज जो हुआ है वो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, जिसका साइन ये है आपका, और वो आपका 2020 में ही रिलीज हुआ है. टाइप ऑफ फॉर्मेट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है इसका. आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप का फॉर्मेट पूछे HTML का, तो यू कैन से दैट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट. कंटेनर फॉर जो है, दैट इज HTML एलिमेंट contained by the web browser as well. Now talking about the extended from, that is SGML का extended from है. Extended to, that is XHTML. Open format की अगर हम बात करते हैं तो yes, it is an open format. Now talking about the website क्या है, html.spec.whatwg.org, और फिर ये साइन, ये आपका वेबसाइट है HTML का. Now talking about the next one related to the web HTML. Web browser receive HTML document from a web server or from a local storage and then render the document into the multimedia web page. HTML describes the structure of a web page semantically and originally included cues for the appearance of the document. HTML elements are the building blocks of HTML page, with HTML construct, image, and other objects such as interactive forms may be embedded into the that is on the form of rendered page. HTML provides a means to create the structured document by denoting the structural semantics for the text such as heading, paragraph, list, links, quotes,
and other items, so that the semantics that they were using for the HTML that are provided to create a structured format as well, and that could be in the form that we are using, such as headings, paragraph, list, links, quotes, and etc., and other items also. HTML elements are delineated by the tags written by angle bracket, and the HTML tags that we are using, that is in the form of the angle bracket that we have here, is like that, represented by like this: close, opening, and closing. Tags such as this closing tag, img's closing tag, opening tag, img slash closing black, and then angle bracket, and of course opening tag, input, closing tag, and then directly that is a representation to write an HTML in the format here. Now moving on with the next that we have here. Now to introduce content into the page, other tags are such as that paragraph tags, this is surrounded and provide the information about the document text and may include the other tags as sub-element. Browser do not display the HTML tags but use them to interpret the content of the page as well. HTML can embed programs written in the scripting language such as JavaScript, which affects the behavior of the content of a page. Inclusion of CSS defines the look and the layout of the content. The World Wide Web Consortium, that is W3C, former maintainer of the HTML, the current maintainer of the CSS standard, has encouraged the use of the CSS over explicit presentation HTML since 1997. Now talking about the semantics of HTML, semantic HTML is a way writing an HTML that emphasizes the meaning of encoded information over its presentations, that is look. Semantic HTML is that the semantic HTML is a way that we are writing the HTML that emphasize the meaning of the encoded information over to the presentation, that what the look about the HTML that we are using as semantic HTML. HTML has included the semantic markup from its inceptions, but has also included the presentational markup such as font, that is represented by I, and the center tag. There are also semantically neutral space and div tags since the late 1990s, when cassetting style sheet were beginning to work as most browser. Web authors have been encouraged to avoid these used to presentation HTML markup with a web to the separations of the presentations and the content as well. So HTML जो है वो basically आपका एक semantic markup है जो कि एक inception के लिए use किया जाता है, जिसमें हम font use करते हैं. Okay, we are using the center also, and that ये 1990s में ही शुरू हो गया था div tag के साथ, but हम इसको अब avoid करते हैं इसको use करने के लिए, because हमें HTML जो markup language है उसका एक view जो है वो separate और presentation level पे बनाना होता है उसके content के साथ, तो इस वजह से हम इसे avoid करते हैं. तो this is the use of the semantic HTML here. Now moving on with the next that we have here is with respect to in our 2001 discussions of the semantic web, the Berners-Lee and the other gave the examples of the ways in which the intelligent software agents may one day automatically crawl the web and find, filter, correlate previously unrelated published facts for the benefits of the human user essay. Such agents are not common even now, but some of the ideas of Web 2.0 mashups and the price comparison website may be coming close. The main differences between the web application hybrid and the Berners-Lee semantics agents lies in the fact on the current aggregation of the hybridization of information is usually designed by the web developers who already know the web location and the API semantics of the specific data they wish to mash, compare, and combine. Where we are using the mashup to compare, to combine the website specific data there. Now moving on with the next point that we have here with reference to the HTML semantics as an important type of a web agent that does not crawl and read web page automatically without the prior knowledge of what it might find in the web crawler and the search engine spider. These software agents are dependent on the semantic clarity of web page they find, as they are using the various technologies and algorithms to read and index millions of web pages a day and provide a web user with a search facility without which of the world's wide web
useless would be gracefully introduced here. So class आज के लिए था ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion in the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and hopefully you will enjoy the video. Thank you. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion in the comment box. Please like, share and subscribe our channel and go through with the video that we are uploading, and please support and those who had subscribed our channel. Thanks for them to supporting us, and please do like, share and subscribe. Thank you.